Hello everyone, welcome back to Excel Learning. This is your digital learning platform and today I have brought chapter the last lesson for ICSE students. First of all ये देखो कि ये जो चैप्टर मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ मैंने लिया है ये एक्चुअली सीबीएसई का पीडीएफ है, ठीक है। तो सीबीएसई में भी सेम चैप्टर है, तो यही बस ये जो पीडीएफ है ये मुझे मिला तो मैंने बस यही ले लिया। हालांकि स्टोरी जो है वो सेम है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में ये चैप्टर हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet. So basically, what happened in this story is that after overpowering the districts of Alsace and Lorraine, यहाँ पे दो जगह का नाम हम लोगों को मिलेगा, एक है एल्सेस और एक है लोरेन इन फ्रांस। और ये तो जगह कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो बर्लिन जो है वो यानी कि बर्लिन ऑर्डर कर रहा है कि एल्सिस और लोरेन की स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो उसी के ऊपर ये जो स्टोरी है ये बेस किया हुआ है। देखो शुरू करता हूं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. So the very first sentence is very informative. First of all, here I is the narrator who is narrating the story, okay, and the second character is Hamel. Hamel is the teacher. So here the narrator is telling that on that day he was very late for the school and he was afraid to go to the school. Why? Because on that day their teacher Hamel was supposed to ask them questions on participle and he did not know a single word of participle. उन्हें participle का एक भी word कुछ भी नहीं मालूम था। For the moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. So the day was very warm and the day was very bright. ये जो point है ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Prussian soldiers, German, okay, were drilling. It was all much more tempting than the rule of the participles, but I had the strength to resist myself and hurried off to school. तो ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है कि तो फिर उन्होंने ये सोचा, नैरेटर ने ये सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और आज मैं क्या करूंगा, आज मैं बाहर जो है अपना समय बिता दूंगा, ठीक है। तो वो दिन जो था वो बहुत ही ब्राइट था, बर्ड्स जो है सब चीप कर रहा था और in the open field of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Prussian soldiers जो है वो लोग drill भी कर रहा था and all the scenic beauty, everything was much more tempting than the rules of participle. But the narrator could resist himself. वो he had self control, okay, वो अपने आप को कंट्रोल कर पाया and he hurried off to the school और वो स्कूल के लिए रवाना हो गए। यानी कि though he was very much afraid of their teacher Hamel, but still he went to school. When I passed the town hall, there was a crowd. Okay, there was a crowd in front of the bulletin board. ये भी याद रखना. There was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, mark करते रहना. The lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought myself without stopping, what can be the matter now? So यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नैरेटर जब स्कूल जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ जमा हुआ है एंड द बुलेटिन बोर्ड सिग्निफाइज द सोर्स ऑफ बैड न्यूज बिकॉज सिंस लास्ट 2 years they have been getting all the bad news from the or through the bulletin board only. What kind of news? The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer. यहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है। This time the narrator thought कि अभी भी शायद ऐसा ही कोई bad news bulletin board पे दिखाया जा रहा है. This is the reason there was a crowd in front of the bulletin board. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher. What's the name of the blacksmith? Watcher. Who was there with his apprentice. यहाँ से MCQ आ सकता है कि blacksmith किसके साथ था और वो अपने apprentice के साथ था, learner के साथ था, reading the bulletin
called after me, उन्होंने मुझे बुलाया. Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. That means you have plenty of time in your hand. Please don't be in hurry. I thought he was making fun of me and reached in Hammond's little garden all out of breath. So he was kind of running, and finally, when he reached the garden of their teacher, Im Hamel, the narrator was out of breath. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बर्सल. ये होता है ना कि आप लोग जब स्कूल जाते हो तब बहुत एकदम यानी कि बहुत नॉइज होता है, चिल्लम चिल्ली होता है, और एक होता है रिसेस टाइम में, और एक होता है जब स्कूल ओवर हो जाए तब होता है. सो यहाँ पे नाटक ये बता रहा है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बर्सल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. तो बाहर से यानी कि जब स्कूल शुरू होता है तब इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ली रहता है कि स्कूल के बाहर से वो आवाज कान तक पहुंचता है. क्या आवाज होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मार्क करके करते रहना. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स टुगेदर. Okay, very loud with our hands over our ears to understand better. So there was a lot of noise that students usually keep their hands on their ears to understand the lessons better, so that the outer noise would not get into their ears. And the teacher's great ruler rapping on the table. और teacher जो है उनका जो great ruler है वो टेबल पे रैप कर रहा है. But now it was all so still. तो देखो, first of all, when he was coming to school at that time, he saw a crowd in front of the bulletin board. Second, every day he used to get the noise of the school room. But today it's complete silence. तो यहाँ पे ये जो है ये एक फर्स्ट टर्न है कि उस दिन स्कूल में एकदम शांत था स्कूल. ठीक है, there was not a single sound. I had counted on the commotion. Commotion means noise. Okay, to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. तो अब यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे वो नैरेटर कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो कॉमोशन का अपॉर्चुनिटी लेके मैं चुपचाप क्लास में जाके बैठ जाता था. लेकिन आज क्या हुआ? द स्कूल वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. So terrible iron ruler was being carried by M. Hamel. Strict. Okay, he was a strict teacher. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. So you can imagine in other times what happens. Basically, whenever there was a commotion, I used to get into the class without being seen by anyone. But today, on that particular day, the school was as quiet as Sunday morning. So in front of everybody, the narrator had to get into the class, and one can imagine that how frightening the moment is going to be. But nothing happened. ये जो है ये second turn है. ओके, बट नथिंग हैपेंड. अब देखो, टीचर जो है एम हैमल वो बहुत स्ट्रिक्ट है. वो रूलर लेके क्लास में मतलब अप एंड पेसिंग अप एंड डाउन ये कर रहा है. लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा नैरेटर का, हालांकि वो लेट आए हैं. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz." So what's the name of the narrator? Franz. We were beginning without you. तो आज जो है, आज माहौल कुछ अलग ही है. आज नैरेटर लेट करके स्कूल आए, लेकिन उसके बावजूद भी ही वॉज नॉट पनिश्ड. ओके, उनको कुछ भी नहीं कहा टीचर ने, हालांकि बहुत काइंडली कहा कि प्लीज अपनी जगह पे जाओ, हम लोग शुरू ही करने वाले थे तुम्हें छोड़ के. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap all embroidered. पूरा मार्क करके रखो. और लास्ट पेज में हम लोगों ने जो फ्रिल्ड देखा, फ्रिल्ड मतलब डेकोरेटेड, लिख के रख लो. ठीक है, तो जब नैरेटर बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मैंने अपना डर को ओवरकम किया तो मैंने देखा कि हमारा जो टीचर है वो अपने बेस्ट कपड़ों में है उस दिन.
ओके, फ्रिल्ड किया हुआ एक कैप पहन के है, शर्ट पहने हुए है, लिटिल बैक सिल्क कैप था और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। यहाँ पे भी मार्क करके रखना। सो बेसिकली वो जो ड्रेस है, वो जो यूनिफॉर्म है, एम हैमेल दो ओकेशन में पहनते थे। एक है अगर स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए हो, और या फिर प्राइज डेज। यानी कि हम लोगों को यहां तक इतना इंफॉर्मेशन मिला कि आज शायद इंस्पेक्शन है या फिर प्राइज डेज है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. So there was no talking at all. The school was, everyone was grave, everyone was silent. Okay. The whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, mark करके रखना. Okay, with his three-cornered head hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. तो अब उन्होंने नैरेटर जो है वो एकदम मतलब आश्चर्य हो गया कि लास्ट बेंच जो है वो बेसिकली खाली रहता है हमेशा, लेकिन आज वहां पे विलेजर्स है। आज वहां पे विलेजर्स है। कौन कौन है? ओल्ड हॉसर है, अपना थ्री कॉर्नर कैप पहन के है। ओके, मेयर है वहां पे, फॉर्मर पोस्टमास्टर है, और भी बहुत सारे लोग हैं। एवरीबडी लुक सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर। प्रीमर मतलब वो जो जिसमें बुक रखा जाता है, प्रीमर। Thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, and he kept the primer with book on his knees with his spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, अब जब मैं उन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, same grave and gentle tone, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जेंटल है और ग्रेव टोन, यानी कि कुछ वहां पे हुआ है इसीलिए वो बहुत ग्रेव है। ग्रेव मतलब बहुत सीरियस है, ठीक है। विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, my children, this is the last lesson I shall give you. So this is the problem. Okay, it was the last lesson that M. Hamel was going to give them. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन और सॉरी एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, से इट हैज अ सेंस ऑफ sadness. The new master comes tomorrow. This is our last French lesson. I want you to be very attentive. So you can imagine how pathetic it's supposed to be for a teacher, that the teacher knows that today is the last lesson he is going to his students. Okay, next onwards only French, only German would be taught in the schools, and a new master comes. एक सेकेंड, मैं जस्ट अपना दवा ले लूं, मेरा दवा लेने का टाइम हो गया है। ओके, चलो। I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. Oh, the watches. Sorry. Oh, the riches. That was what they had put up at the town hall. So यहाँ पे जाके हम लोगों का concept clear हो रहा है. Why there was a crowd in front of the bulletin board? Because the bulletin, on the bulletin board, this particular news was being shown that next day onwards only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. मुझे पता ही नहीं है कि फ्रेंच कैसे लिखा जाता है. I should never learn anymore. मुझे पता ही नहीं है और मैं कुछ सीख भी नहीं पाऊंगा फ्रेंच के बारे में. आई मस्ट स्टॉप देयर. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार. जार इज अ रिवर. ओके, अब यहाँ पे जाके अ सेंस ऑफ रिपेंटेंस, यहाँ पे मार्क कर लो, अ सेंस ऑफ रिपेंटेंस. फैंस जो है उनको रिपेंट हो रहा है कि मैंने आज तक फ्रेंच क्यों क्यों नहीं मैंने सीखा. फ्रेंच बिना सीखे मैं जा रहा था बर्ड्स एग्स कलेक्ट करने या फिर स्लाइडिंग करने जार में. सो तब मेरे पास मौका था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, मैंने कुछ भी नहीं सीखा. लेकिन आज टुडे इज द लास्ट लेसन आई एम गोइंग टू गेट ऑन फ्रेंच.
My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of my saints were old friends now that I could not give up. तो ये सब जो फ्रेंच के ऊपर जो बुक्स है जो मेरे लिए बहुत ही भारी लगता था पहले, आज वही सब बुक्स मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And in Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एक थॉट कि आज इम हैमिल का लास्ट डे है, सो इससे क्या हो रहा है कि इम हैमिल के लिए मेरे मन में जो डर था या फिर थोड़ा सा भी अगर हेट्रेट था, होता है ना कि कोई कोई कि एक पर्टिकुलर टीचर या उनको अच्छा नहीं लगता है या फिर कोई टीचर जिनको हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इम हैमिल के लिए मेरे मन में श्रद्धा, मेरे मन में प्यार और ज्यादा बढ़ गया. पुअर मैन, यहाँ पे पुअर मैन मतलब अनफॉर्चुनेट, ओके, not in poverty, unfortunate. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Sunday clothes का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पहले ही मिल गया कि कौन सा ड्रेस पहना है आज. तो यानी कि इम हैमिल आज ना तो इंस्पेक्शन डे है, आज ना तो प्राइस डे है, तो इम हैमिल क्यों आज अपने संडे क्लॉथ में आए हैं? जस्ट टू पे ऑनर टू हिज लास्ट लेसन. And now I understood why the old men of the village were sitting in the back of the room. Okay, now the narrator comes to know or understands that why the villagers sitting in the schoolroom in the last bench. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. For how long has he been teaching French? For 40 years. And of showing the respect for the country that was theirs no more. तो आज जो है, क्यों आज क्यों all the villagers are sitting in the last bench? Just to pay honor to Im Hamel and his 40 years of long service and for their country which is not theirs right now. क्योंकि अभी तो जर्मन बर्लिन से ऑर्डर आ गया है ना कि उन लोगों को अभी मतलब एल्सेस और लोरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा, फ्रेंच नहीं सिखाया जाएगा. तो just to pay respect for the teacher and for their country, all the villagers have come to the school today. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to decide. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first word and I stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो तब मेरा नाम बुलाया गया और सारा मैं पूरा कंफ्यूज्ड हो गया. द नेटर वाज कंप्लीटली परप्लेक्स्ड. ही कुड नॉट इवन स्पीक अप अ सिंगल वर्ड ओवर देयर. आई हर्ड इम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow." And now you see where we have come out. So यहाँ पे जो इम हैमिल है वो बता रहे हैं कि इनको सबको कि देखो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं आज मैं नहीं करूंगा, कल मैं करूंगा, आज कल मेरे पास बहुत समय है, अभी मेरे पास बहुत समय है. तो देखो यही हर एक चीज को कल के लिए छोड़ते छोड़ते आज हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं. दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस. यहाँ पे एल्सेस जो है पर्सोनिफाई किया गया है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोस फेलोज मतलब जर्मन्स का बात यहाँ पे बोल रहे हैं वो, ठीक है. नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव देयर राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तो अभी देखो हम लोग कहाँ पे आके पहुंचे और वो लोग सारे जो सोल्जर्स या फिर जर्मन जो है वो उंगली उठाएगा हम लोगों पे और हम लोग को ये पूछेगा कि वाह यू कंसीडर yourself Frenchman and you don't know how to speak and how to write in French, but you are not the worst poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है फ्रेंड्स, इसमें हम सब लोगों का दोष है. क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है? तो यहाँ पे और एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी हम लोग को मिल रहा है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम हैमिल. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little money
लिटिल मोर मनी एंड आई, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं, तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो एंशियस नहीं थे, दे वर नॉट कंसर्न अबाउट योर learning, about your studies. They sent you to the mail so that you can earn some money for the family. तो यहाँ पे और एक बात जो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नैरेटर की जो फैमिली है, दे वर नॉट वेल टू डू फैमिली, दे वर काइंड ऑफ इन पॉवर्टी, दैट्स व्हाई दे सेंड देयर चाइल्ड टू द वर्क, ओके। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं, क्यों, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माय फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो दो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, एम हैमेल अपने ऊपर दोष कर रहा है, रिप्रोच कर रहा है कि मैंने भी तो किया, कि मैंने कभी कभी तुम्हें कहा कि जाओ तुम मेरे गार्डन में पानी दे के आओ, मैं तो तुम्हें उस टाइम ये भी बता सकता कि नहीं मैं दे दूंगा पानी, तुम अपना लेसन करो, या फिर जब मुझे फिशिंग करने जाना था तो मैंने बस ऐसे ही छुट्टी दे दिया। सेंस ऑफ ऑनेस्टी यहाँ पे शो कर रहा है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल language in the world, the clearest, the most logical, mark करके रहना, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। बहुत ही important ये एक पैराग्राफ है। तो एम हैमिल का ये मानना है कि जब पीपल एंस्लेव्ड हो जाए, तो जब तक उन लोगों के पास जब अपना लैंग्वेज है, दे हैव द की टू द प्रिजन। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. So then Im Hamel started reading out the lessons, and it was very wondrous for the narrator that he could understand everything very easily। उन्होंने ये रियलाइज किया कि मैंने कभी इतना अटेंशन शायद दिया ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतना पेशेंटली एम हैमिल कभी हम लोगों को चैप्टर समझाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. So seeing M. Hamel, one could say that he was like, like, मतलब उसे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे, मेरे पास जितना ज्ञान है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, मुझे जितना पता है कि मैं सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को दे दूं और एक स्ट्रोक में उन लोग के दिमाग में पूरा घुसा दूं। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. Mark करके रहना, ठीक है? Written in a beautiful round hand. फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, कॉपी में क्या लिखा था? फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. So like लग रहा था कि पूरा स्कूल रूम एकदम डेकोरेट किया हुआ है और सब कोई कितना शांत बैठा है वहां पे। The only sound was the scratching of the pens over the paper. यहाँ पे ऑडिटरी इमेज जो है वो बताया गया है, ठीक है, कि सिर्फ सबको लिख रहा था, वही जो साउंड जो है वही साउंड बस सुनाई दे रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who walked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो तब छत पे क्या होता, पिजन्स जो है वो लोग कू कर रहा था। तब मेरे मन में, नरेटर के मन में ये ख्याल आया कि क्या जर्मन जो है वो हम लोग को फोर्स कर रहा है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जर्मन सीखेंगे, ठीक है? तो क्या वो पिजन्स को भी फोर्स कर पाएगा कि उन लोगों को भी कू करना है फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज में? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो क्या कहा यहाँ पे, एक मतलब
सेंस ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे शो कर रहा है, या फिर सेंस ऑफ डिलेमा यहाँ पे, ठीक है। अ सेंस ऑफ डिलेमा लिख के रखो कि व्हेन ही वाज राइटिंग, व्हेन द नरेटर वाज राइटिंग, by and by he was looking at M. Hamel, and he observed, he noticed that M. Hamel was trying to fix his mind. एक बार वो एक चीज को देख रहा है तो सेकेंड टाइम और एक चीज को देख रहा है, एज इफ ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ परप्लेक्शन, as if he is in a state of confusion, as if he is in a state of dilemma. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted. कौन सा क्या प्लान किया था? हॉप वाइन, एमसीक्यू. Himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Uh, Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. तो वो लोग ट्रंक्स सब कुछ पैकिंग भी कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है एम हैमिल को छोड़ना है वो जगह. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. ओके, but he had the courage to hear every lesson to the very last. Uh, After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. Old Hauser was also crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Laugh and cry. क्यों? क्योंकि कि ओल्ड हॉसर का आवाज ऐसा लग रहा था कि हम लोग हंसे और रोना भी आ रहा था. Why? Because it was the last lesson they were getting on that day. How well I remembered it, that last lesson. All at once the church clock struck 12. MCQ. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussian returning from drilling sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. कि उनको देख के ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मान लो कि उनका वो रूप मैंने कभी देखा ही नहीं पहले. My friends, said he, I but something choked him. He could not go on. Imhamil कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और फिर उन्होंने अपना चौक लिया और बोर्ड में लिखा जितना बड़ा हो सका. उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, यानी कि वाइव ला फ्रांस. ये जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, तो इसका जो मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा. He could not utter a single word. He just gave us a gesture with his hands that told us, that instructed us that school is dismissed and you may go. यहाँ पे जो है स्टोरी खत्म हो रहा है. अब दो एक पॉइंट लिख लो. लाइक दिस स्टोरी इज एक्चुअली मेनली अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट. आई रिपीट, दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट द लॉन्गिंग टू लर्न द मदर टंग एंड लव फॉर इट. और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट हैज अ सेंस ऑफ patriotism. They feel very loved for their own language when it is the last day of their language. So it has a sense of patriotism. और एक जो पॉइंट है आप लोग लिख लो थीम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग थीम्स बता सकते हैं कि एक है कल्चर एंड लैंग्वेज. ये देखो, ये इस स्टोरी में उनका कल्चर शो कर रहा है और लैंग्वेज. तो डेफिनेटली द स्टोरी इज बेस्ड ऑन फ्रेंच लैंग्वेज.
पैट्रियोटिज्म एंड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शो कर रहा है. दे फील वेरी लव्ड फॉर देयर कंट्री. दे आर वेरी मच ग्रीव्ड टू थिंक दैट देयर own country is not theirs at all. Education and knowledge. Education on and knowledge. M. Hamel has clearly uh, sketched the uh, portrait that how education and knowledge is important to all of us. How education, knowledge, and mother tongue, all these three are important when people are enslaved. And community and solidarity. कम्युनिटी क्योंकि देखो वहां पे जो फ्रेंच मैन है उन लोगों का एक अलग कम्युनिटी है, जो पर्शियन सोल्जर्स है उन लोगों का अलग कम्युनिटी है. तो कम्युनिटी में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So this is the story. I hope you have liked it. So please subscribe, share with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद.